Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today in this lecture we have to continue our paper genetics. Okay, in this lecture we have to discuss about the post-Mendelian concept that we have discussed earlier, and in this session we have to continue from another topic, that is pleiotropy. Okay, so let's discuss about the pleiotropy. Pleiotropy हमें कहा के कहसु pleiotropy. Pleiotropy गोटे वर्ड रो आसला जाना हला हमर प्लीरन. प्लीरन माने का प्लीरन रो माने हला मोर देन वन काना मोर देन वन जेतला देखु जो अकॉर्डिंग टू मेंडल वन जीन दैट रेगुलेट वन कैरेक्टर मेंडल रो कांसेप्ट हिसाब जदी जिमा वन जीन काना करसी दैट रेगुलेट वन कैरेक्टर गुटे कैरेक्टर दैट इज रेगुलेटेड बाय वन जीन that is concept of Mendel, but this is post Mendelian concept. That means there are certain genes that regulate more than one character, जदि मोर देन वन कैरेक्टर के गुटे जीन रेगुलेट करला बेले से कांसेप्ट टाके कहू हमें काम लेकरी प्लियोट्रॉपी. दिस इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी. ओके, गोटे एग्जांपल ले कर जाऊं क्लियर रे में बुझी जिमा जे गोटे कैरेक्टर. ओके, वन जीन दैट इज रेगुलेटिंग मोर देन वन कैरेक्टर. लेट्स सी दैट one of the example in case of Poisson sativa. Okay, so pleiotropy हम जितले देखमा for example pea plant रे हला pea plant रो हमर जेते बोले गोटे जीन देखुछु that is B gene. Okay, B gene जेते बोले homozygous dominant condition रे थिसी B gene in homozygous dominant condition. Homozygous dominant condition. Homozygous dominant condition रे लिखली कैपिटल B. ओके, जेते बेला homozygous dominant condition रे थिसी से टाइम रे that is responsible for the round seed shape. देखो फर्स्ट कैरेक्टर 1 जेनटा के रेगुलेट करसी. कैरेक्टर 1 पहला जेन कैरेक्टर के रेगुलेट करसी सेटाला सीड शेप काना आसबा हमर राउंड सीड शेप आसबा. बट आ गुटे कैरेक्टर के भी रेगुलेट करसी जे बीज इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन रे दैट विल रेस्पोंसिबल फॉर द मोर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम फॉर्मेशन. काना करबा देखो दैट विल रेस्पोंसिबल फॉर मोर starch branching enzyme formation. Starch branching enzyme माने काना जेतले starch देखुछु starch is the polymer of what? Starch is the polymer of glucose, and बहुत सारा glucose जेते बेले join हेसी सेनो हमर काना बनसी स्टार्च बनसी. तो बहुत सारा ग्लूकोज रो ब्रांचिंग फॉर्मेशन करबा लागि जेन गोटे एंजाइम दरकार ताके कहउछ हम स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम. सपोज देखो मैं गोटे नेक्स्ट डायग्राम रे कर दूछे एटा गोटे माने कर ग्लूकोज हला दिस इज अनदर ग्लूकोज बहुत सारा ग्लूकोज रो इनो काना हबा ब्रांचिंग फॉर्मेशन हबा. ओके, तो बहुत सारा ग्लूकोज रो जेते बेला ब्रांचिंग होचे सेनो हमर बनसी काना सेनो हमर बनसी स्टार्च. ओके, तो जेतकी अधिका स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम फॉर्मेशन हबा सेतकी अधिका स्टार्च रो ब्रांचिंग हबा. स्टार्च रो साइज जे देखमा दैट विल बी इंक्रीज सो दैट जेहेतु मोर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम फॉर्मेशन हबा तो सेनो हमर काना हबा देखो सेनो जदी सीड रो तार जदी स्टार्च ग्रेन माने देखमा लार्जर स्टार्च ग्रेन देखबार के पामा. तो you know starch grain this is just looking like this. इटा ना हमर काना हबा that will leads to large size starch grain. starch grain रो साइज ता हमर काना हबा लार्जर हबा जेते बेले होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन रे थिबा बीज. देखो 2 नंबर कैरेक्टर काना 2 नंबर कैरेक्टर 2 हला that is larger starch grain रो साइज. ओके, जेते बेले हमर ई होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन रे थिसी
homozygous recessive condition रे जेतेबेले थिसी माने small b condition रे जेतेले थिसी first character that is regulating wrinkle shape ये काना करबा wrinkle shape of the sheet that will responsible केतेबेले homozygous recessive condition रे बीजिन रहबा एंड आ गोटे कैरेक्टर काना जे से टाइम रे हमर काना हबा जेतले होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन रे बीजिन रहबा से टाइम रे हमर एसबीई एंजाइम स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के मी शॉर्ट फॉर्म रे लिखली एसबीई इतर अमाउंट काना हबा लेस हिजिबा जेतु इतर अमाउंट लेस हिजिबा तो स्टार्च रे ब्रांचिंग भी कमी जिबा एंड स्टार्च रे ब्रांचिंग कमी जिबा द्वारा हमर जन स्टार्च ग्रेन देखमा से भितरे जन स्टार्च ग्रेन थिबा तार साइज काना हबा स्मॉलर साइज हबा इटा हमर स्मॉलर स्टार्च ग्रेन ओके देखो गोटे जीन बीज दुईटा कैरेक्टर के रेगुलेट करूचे काना काना दुईटा कैरेक्टर सीड शेप whether it will be round shape or wrinkle shape हमें जाने छो this one that is wrinkle shape and दुई नंबर कैरेक्टर के रेगुलेट करूचे काना whether the starch okay grain the size of the starch grain will be larger or that will be smaller okay so let's cross between the homozygous dominant and homozygous recessive भितर जेतले हमें क्रॉस करमा कैपिटल B क्रॉस विथ स्मॉल b ओके इटा के जेतले क्रॉस करमा इनो केतरा टाइप रो गैमेट फॉर्मेशन हबा वन टाइप इनो केतरा टाइप रो गैमेट फॉर्मेशन हबा वन टाइप स्मॉल b जेतबेले दुईटा के क्रॉसिंग करमा तो कानास पाएमा हमें कैपिटल B स्मॉल b पाएमा ओके इनो कानास पा देखो इटा हमर काना थिला राउंड सीड शेप थिला राउंड शेप थिला शेप सीड रो एंड अमर काना थिला स्टार्च ग्रेन रो साइज ता काना थिला लार्जर थिला एंड इन अमर काना थिला रिंकल शेप थिला एंड दुई नंबर थिला अमर स्टार्च ग्रेन रो साइज ता स्मॉलर थिला ओके तो इनो जेतेबेले हला देखो इनो डोमिनेंट बी जीन भी अछि रिसेसिव बी जीन भी अछि डोमिनेंट बी जीन इज रिस्पांसिबल फॉर लार्जर or more amount of starch enzyme formation smaller b or the recessive b gene is responsible for the less starch branching enzyme माने more भी formation नहीं परबा less भी formation नहीं परबा तो हमर काना हबा गुटे intermediate amount of starch branching enzyme इन formation हबा ओके तो इनो देखो पहला सीड रो शेप जेतेले देखु छु सीड शेप ता असला राउंड शेप असला सीड शेप ता असला राउंड असला दैट मींस राउंड इज डोमिनेंट बलि के धर्म पहला कैरेक्टर सीड शेप रो एंड दुई नंबर काना हला देखो जे इनो हमर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम रो अमाउंट ता काना हला इंटरमीडिएट एसबी एंजाइम ता काना हला तार अमाउंट ता इंटरमीडिएट अमाउंट रो फॉर्मेशन हला जेतु इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम फॉर्मेशन हला सेतिर लगी हमर इनो स्टार्च ग्रेन रो साइज देखमा दुई जनकर मजा मजी असला ओके तो इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन ओके तो इनो काना शो कला देखो इंटरमीडिएट कैरेक्टर ते शो कला दैट मींस इ गुटे अनदर पोस्ट मेंडेलियन कांसेप्ट के फॉलो करूचे दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस ओके इ काना फॉलो करूचे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फॉलो करूचे सोर कर इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे काना हेसी इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे जेतेबेले हमें देखुतला in case of mirabilis jalapa केसरे रेड और व्हाइट भितरे क्रॉस कले पिंक ऐसे रेड और व्हाइट रो इंटरमीडिएट वैरायटी थिला पिंक just like that large size starch grain and smaller size starch grain रो मजा मजी असला काना intermediate size middle size रो starch grain तानो फॉर्मेशन होची so you know देखो B gene that is regulating the seed shape whether it will be round or that will be wrinkle and another one whether the starch grain size will be larger or that will be smaller or that will be intermediate okay I hope you all enjoy this lecture if any doubt you can write in the comment section please like share and subscribe our channel thank you